मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा आगे। ठीक है, हमारा जो ये सेशन चल रहा है, हमारी जो ये सीरीज चल रही है, वो चल रही है इंटरव्यू ओरिएंटेड। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के रिलेटेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, आपको मैं रेडी कर रहा हूँ ताकि आप इंटरव्यू निकाल पाओ, ताकि ओके। आप AWS टेराफॉर्म इन सब पे इतने कंफर्टेबल हो पाओ कि आप इजीली इंटरव्यू निकाल भी लो और जब काम करने जाओ तो सरवाइव भी कर पाओ। ठीक है, तो हर टॉपिक को बहुत आपके डिटेल में पास पढ़ेंगे। 4 इयर्स 5 इयर्स के लेवल पे AWS टेराफॉर्म का एक्सपीरियंस के इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर है, है, सिनारियो बेस्ड एकदम है, क्वेश्चंस। एकदम है। मैंने पिछले 6 महीने के अंदर अंदर 130 इंटरव्यू लिए हैं, 130 इंटरव्यूज। जैसे कुबरनेटिव का मेरे पास अच्छा नोट्स है, सिनारियो बेस्ड 4 5 इयर्स का अजूर कुबरनेटिव के ऊपर, कुबरनीटिस का क्योंकि तो मैंने चलो, बहुत इंटरव्यू दिए हैं हाँ कुबरनीटिस का तो कुबरनेटिव चलो पे। आपके पास होगा, है ना। टेराफॉर्म की अगर बात करूँ तो टेराफॉर्म पे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज अभी लिए हैं। तो हमें क्या होता है ना, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, मैं मार किधर खा जाता हूँ हाँ, स्क्रिप्टिंग में, क्योंकि वो वाला चीज मैं कर लूंगा ना, हम्म, मैं निकाल लूंगा इंटरव्यू। AWS भी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बट आ जाता है कि ऑटोमेशन में क्या आता है, स्क्रिप्टिंग पाइथन, एक स्क्रिप्ट लिख के दिखाओ, आपने कौन सा ऑटोमेशन किया है स्क्रिप्ट में, क्या क्या किया है, तो उधर फंस जाता हूँ। कुबरनीटिस के आपके पास जो क्वेश्चन है वो आप रेडी रखना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस या मोस्टली क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है, 5 6 साल 10 साल एक्सपीरियंस लेवल के क्वेश्चंस, वो मैं आपको दे दूंगा। ओके। आंसर्स आपके अलग होंगे और 10 साल वालों के अलग होंगे, है ना। तो मैं हाँ आपको हाँ। क्वेश्चन एंड आंसर दोनों दूंगा, ताकि उससे क्या होगा कि आप समझोगे कि 10 साल वाला बंदा कैसे एक्सप्लेन करता है। और आंसर ऐसे नहीं होंगे कि कहीं से निकला, गूगल से निकाला हुआ या फिर कहीं से ढूंढ के निकाला हुआ बुक से, नहीं। जो वो व्यक्ति बोला है इंटरव्यू में आंसर, वो सेम आंसर आपको मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम जब इंटरव्यू लेते हैं ना, तो हम लोग ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड करते हैं उसको, तो उसके वर्ड्स पूरे आते हैं मैच होके, वो वर्ड्स आपको दूंगा मैं, वो समझना और उसको लेके फिर बोलना। ओके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एकदम समझाऊंगा मैं आपको। एक सेकेंड, मैं आपको एक कुबरनिटीज का क्वेश्चन मेरे पास में रखा था आपसे, आपसे एक बार मैं चाहता हूँ जानना। अगर आप वो हाँ, बता दिए तो कुछ नहीं। कुबरनिटीज निकाल लोगे। मुझे बताओ, व्हाई कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। Why container orchestration is important? Okay, तो because the earlier okay, so earlier there was a Docker and people using Podman, and in a Docker form there are some limitations to uh, manage all the containers. There in market there should be one tool to manage all the containers and all, to orchestrate that all the containers. So in a Docker there are some limitations. To overcome that limitation, so Kubernetes comes in the market. As a Kubernetes is open source, then Red Hat also giving the tool like OpenShift and giving the support also. देखो, आपने जो डॉकर सॉम को बताया ना लिमिटेशन के बारे में, Mm-hmm. वो लिमिटेशन नहीं है। अगर मान लो मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है तो थम्स अप वाला भी दे रहा है, कोक वाला भी दे रहा है ना, दोनों थम कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं ना। Mm-hmm. लेकिन Mm-hmm. कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा कि अगर मैं डॉकर सॉम यूज़ करता हूँ तो मेरे को एक ही नोड के अंदर सारे कंपोनेंट्स रखने पड़ेंगे, मास्टर नोड के, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कुबरनेटिस में। तो बहुत सारे यूनिक Mm-hmm. डिफरेंसेस जो आपको बोलना पड़ेगा एज अ 5 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन। Mm-hmm. चलो एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज कुबरनेटिस आर बैक। Role binding, no? So, okay. So, we can bind the role user base, like if we create a like a user, like a
suppose there is a user called Armstrong. He should we can give the admin access to it, and some user we can give the view access, edit access. Hmm. So this is the and we can give the access to at the group also we can create, and inside that group we can add the user also. So that particular, suppose there is a user Armstrong and we given the admin access to that user, so that user acts as the admin over there. And some of the developers they want only view access, so we can give them view access like using command oc ocadm Hmm. add role to user, then it then we have to write a view, then the name of the user, and which namespace we are giving access to them we can also define that on mentioning आपको hyphen n डेमन सेट and के the बारे में name पता of है? the डेमन सेट demon set pata hai. Yes, we can create the copy of the um, pod in all the nodes. Usually daemon set is used for the monitoring, suppose we have monitoring tools and we have to install the agent, suppose I'm taking the example of a node exporter, and we want a node exporter copy should be on the all the application servers. So what I will do in the YAML file of daemon set, in which the kind is a daemon set, so I will mention the label over there. So those who are application pod, so I will check in the application pod, inside that application pod YAML file, I will check the label of that application. Suppose I will take example here, the application is Jira. Suppose I mention the label over Jira over there. So in a demonset.yaml file, I mention the label Jira. So whoever application pod having the label Jira, that and I will mention the image also in the demonstrative of YAML file, that node export image, हम्म and that image will install on that particular label pod, pod file, ओके application pod. मुझे ये बताओ ऑपरेटर समझते हो कुबरनेटिस ऑपरेटर ये थोड़ा सा आगे वाला है कुबरनेटिव चलो उसको ऑपरेटर्स. छोड़ते हैं आप ये बताओ क्यूब सीटीएल एनोटेट कमांड के बारे में पता है हाँ, एक जन ने पूछा था एनोटेट, पर मैं यूज नहीं किया कभी एनोटेट. ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको एडवांस लेवल के बता रहा हूँ जो हाँ आपको हाँ हाँ, काम आएंगे चैट जीपीटी में एक बंदे ने पूछा था मुझे एनोटेट. हम्म मैंने पढ़ा भी था चैट जीपीटी पे, पर यूज नहीं किया तो भूल गया मैंने, कभी यूज ही नहीं लेबल्स किया. पता है लेबल्स लेबल्स पता है, जैसे सपोज देयर आर 3 pods. हम्म So whenever we creating a pod will create in any node. हम्म Suppose we have a 10 nodes. हम्म First pod and we have mentioned the replica set 3, हम्म and we have created a application called Jira. So it will get created automatically, like according to the metric. Or suppose there is a no topology is mentioned. Topologies like a 10 toleration, node, pod affinity, anti affinity. So it will check the metric of that node, and a pod will get created automatically randomly. So if and when I'm creating a replica set deployment, I will mention the label over there. हम्म So that label is useful for the load balancing also. Suppose that label is incorrect, so some of the application pod is created on the node, so traffic will not go over there. ठीक है So it will traffic goes to another two pod. ओके ओके अब मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कुबरनेटिस का पूछता हूँ एक आखिरी क्वेश्चन Hmm. उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कुबरनेटिस का लेवल और फिर हम लोग बात करेंगे क्या क्या Hmm. पढ़ना है ठीक है Hmm. Hmm. मुझे बताओ हम दोनों एक कंपनी में काम करते हैं ठीक है Hmm. हमारे पास एक क्लाइंट आया मैं छुट्टी पे हूँ आप अवेलेबल हो ऑफिस में क्लाइंट आके बोलता है कि अ, अभी जो मेरा सेटअप ऑन प्रेम में चल रहा है ठीक है Hmm. वो चल रहा है या फिर क्लाउड में किसी क्लाउड में चल रहा है वो चल रहा है वीएम्स पे मेरे पास मल्टीपल वीएम्स Hmm. है मेरे पास Hmm. 25-30 वीएम्स चल रही हैं उस पर मेरी साइट चल रही है Hmm. डेटाबेस के लिए वेब Hmm. सर्वर सब कुछ वीएम्स पे ठीक है अब मुझे आना है कुबरनेटिस की तरफ तो एज अ अब मुझे आना डेवॉप्स है. इंजीनियर आपको
क्या सजेस्ट करोगे उस क्लाइंट को, मतलब कहाँ जाए वो, ओपन शिफ्ट की तरफ जाए या फिर क्लाउड बेस्ड कुबरनेटिस इंजन की तरफ जाए या फिर ओपन सोर्स की तरफ जाए, कहाँ जाए? Okay. Okay. Suppose you have most of the chances. Suppose you have application pod on the VM, so हम्म, you are the banking client. हम्म, Suppose I consider you are from the banking domain, have a banking application running on the VMware on premises. हम्म, So there would be good option to go with the OpenShift, हम्म, because OpenShift have a support, Red Hat good support, and OpenShift license comes with an Ansible tower also. And right nowadays OpenShift also selling their OpenShift application with the virtualization also, OpenShift virtualization. In the future also it will be good option. but what if And companies suppose what if companies saying like we want to move in the cloud only, we don't want to use open shift, we want to cloud specific kubernetes engine, in that case what you will okay, suggest? that is there are two options, like AWS having Elastic Kubernetes service, and second one is Azure Kubernetes service. Hmm. So you want me to explain how technically we can make the machines on the EKS side? No, I just want, let's suppose I am a non-tech guy, okay? Just you have to explain me like why you are choosing this EKS or GKE. In Google Cloud we have a GKE, right? Suppose Why we we are have choosing a this cloud most platform? of the Windows machine on Windows based application, so we can prefer the Azure one. In But cloud we have two option to configure a Kubernetes cluster. One is PaaS service, like we can go to the platform and the cloud platform, we can just take service from them like EKS, we can create the cluster. mm, Second one is mm, we have to configure multiple servers, cloud based servers mm, like EC2 instances. In that server we have to configure kubeadm or something, and then we have mm, to configure we have to make one master node, two three worker nodes, and we have to attach those all the servers together. So two way we mm. have, right? So कौन सा वे Yes. आप सजेस्ट करोगे उसको क्लाइंट को, कि पैस की तरफ जाए या फिर ऑन ओपन सोर्स की तरफ जाए? ओपन I सोर्स will में समझ रहे हो, suggest the ओपन सोर्स का मतलब हो रहा है कि आप कोई क्लाउड बेस नहीं ले रहे हो, आप दो तीन चार वीएम क्रिएट कर लिए और वहाँ पे। okay, there one option, Red Hat option is really good, Red Hat OpenShift, because no, in which there we can manage DNS, HA proxy, and reverse proxy. हम्म, Reverse proxy is basically HTTPD web server हम्म, outside the cluster of the OpenShift. हम्म, So we can have a good security. We can apply it at our URL level, हम्म, application URL application level. An application pod will run inside the OpenShift cluster. So any new requirement comes, if client comes and they want to host their application in our OpenShift cluster. So we have to make the entry in the DNS as a wildcard entry, and we can purchase the VIP for the domain. हम्म, Suppose star.bajaj.com is the domain, so another domain would be star.pl.pl is stand for production line, star.pl.bajaj.com. So before star, all the application name will, client name will come. So we, and for each domain we can purchase the VIP, and that VIP, that wildcard entry we can mention in the DNS. Then in a HA proxy also we can mention the HA is basically for the load balancing also, and the whitelisting also we can use. In a hap.conf file, we can mention the VIP and that tag with the that domain name star dot it is there. And ठीक है चलो। below that we can do the round robin. We can take the three web servers like a reverse proxy we call it, हाँ, and we can do the load balancing over there. And in the reverse proxy, which is a web server in a httpd.conf, means our application file will be uh, like चलो camera.pl.bajaj. आई गॉट इट। Inside that ingress controller node IP. एक चीज अच्छी है आपकी कि आप एक्सप्लेन सही तरीके से कर पा रहे हो, Mhm. और जिस Okay. तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो तो सामने वाला बंदा समझ पाएगा। तो मैं यूजुअली स्क्रीन शेयर करता हूँ और पूरा तो जैसे आप आप जिस जैसे तरीके से आप प्रिंट कैमरे में में आप पढ़ा था दिख ना रहे हो ना, वैसे। मतलब जैसे कैमरे में हाँ, सामने देख पा रहे हो, हम्म, तो एकदम क्लियर लग रहा है कि कॉन्फिडेंट है और ये सब। हम्म, हम्म, बस थोड़ी बहुत चीज़ें फ्रेशअप करनी पड़ेगी।
हाँ, बट ये कॉन्फिडेंस थोड़ा एडब्ल्यूएस में पूछ लो ना आप, मेरे फँस जाऊँगा। एडब्ल्यूएस में क्या पूछते हैं? आईएएम का सर्विस ना? अच्छा, आप एक मुझे एक बात बताओ, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि एडब्ल्यूएस क्या है? मतलब आप आपके माइंड में भी एडब्ल्यूएस है ना? एडब्ल्यूएस में आपने बोला पूछो तो दिक्कत है। कहाँ दिक्कत है? आप एडब्ल्यूएस को क्या समझते हो? मतलब क्या किस तरीके से लेते हो उसको? मैंने एक्चुअली मेरे को हैंड्स दुनिया की ऑन सबसे काम आसान किया चीज़ है क्लाउड लगती है। एडब्ल्यूएस में। आईटी में अगर किसी बंदे को कुछ सीखना है ना, सबसे आसान चीज़ मुझे क्लाउड लगती है सीखने के लिए। आपको कहाँ हाँ, पे दिक्कत है वहाँ पे? मतलब देखो, दिक्कत क्योंकि आप मेरा है बहुत कि टाइम से मैंने काम कर रहे हो, लोग तो दूसरे फील्ड में रह के भी सुन के भी कुछ कुछ तो सीख जाएंगे। तो आपको दिक्कत अभी मतलब कहाँ पे आती है क्लाउड में मेनली? मतलब अभी को इंटरव्यू और के क्वेश्चंस AWS ही क्यों? इंटरव्यू में हमारे भी पास है। एजोर भी है, हमारे पास जीसीपी भी है, हमारे पास IBM भी है, हमारे पास ओरेकल भी है, हमारे पास, तो यही क्यों?